Hey guys, what's up? How are you doing? So I hope everyone is doing absolutely fine. So today we're again going to continue our environment and ecology course. And did you get your message on time? So I had scheduled this class in the night because I could not take it yesterday. So I hope you got the message on time and everything is fine. So yeah, let us get started with our sessions. Okay. So we have covered a lot of these file and yeah. So I'll just give like 1 minute for everyone to settle down so that we can also proceed. Can everyone hear me? Is everyone absolutely fine? So my head, everything is fine. So yeah, let us get started. And so we had covered biomes in India, right? So that one topic we had covered, right? Biomes in India yesterday. Last time I was telling you about forest and everything, etc. So वो सब हम पढ़ चुके थे अच्छे से, isn't it? So that we had covered in detail. Okay. So ओशियन फोम हाउ इट प्रोड्यूसेस सी ओशियन फोम ये बीच पे मिलता है आपको, ठीक है। जब यूजुअली क्या होता है, जो एल्गल ब्लूम होती है उसके बाद काफी कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। सो वेन एवर देर इज अ वेरी हाई ऑर्गेनिक कॉन्टेंट इन द वाटर, especially after algal bloom, you will find there. Is it clear? So that is what is called as ocean foam. Do not confuse it with your Yamuna wala foam. Okay, ocean foam is different, so that is different. So let us cover world biome today. It's a very important thing. So I hope we have covered related to India, but we have not covered world biome, isn't it? वर्ल्ड बायोम नहीं हुआ ना अभी हमारा? ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं. सो वर्ल्ड बायोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इन रीड. सो फोकस करना और ट्राई टू मेमोराइज एज मच एज पॉसिबल एट योर एंड. सो लेट अस गेट स्टार्टेड द टॉपिक ऑन वर्ल्ड बायोम. ठीक है. अगेन इंडियन बायोम, वर्ल्ड बायोम, दीज आर कोरिलेटेड. ऐसा थोड़ी है इंडिया दुनिया के बाहर है कोई, राइट? So you will find lot of correlations between these two biomes. So that will be there. But yeah, India also will have some unique properties. So that will also be true. So both the statements are true in that case. Okay. This is your first class. You have already started from here. So don't ask for too many questions. Don't follow too many rules. ठीक है. करकुरा के देख लो. The world was not made by very intelligent people. Okay. They were just like you and me. All these rules are created by people like you and me. So there are no good rules around to be followed. Is it absolutely clear? Except laws of physics, chemistry, and biology, everything else is made by human beings. Just remember this one line. Each and every religion, each and every ritual, each and every food item, everything is basically created by us. Our habits, everything is by us. Okay. Except physics, that gravity has to attract, that heavenly bodies attract each other, they are spherical in nature. समझ रहे हो? Like chemistry, that H2O is always be water, H2O2 will always be hydrogen peroxide, and biology, that DNA is made up of nitrogen. समझ रहे हो? Except these laws, everything else is created by you and me, and everything else is subject to change. Sociology, all these things, basically everything is just created by us. Okay. सो ऑल दीज स्टूपिड रूल्स कि अभी नहीं पढ़ सकते, तब नहीं पढ़ सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं कर सकते लाइफ में, ये सब बकवास है. ठीक है. यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी. एवरीथिंग, ईच एंड एवरी रिलीजन, रिचुअल, ट्रेडिशन, कस्टम, फूड आइटम, ड्रेस, then nothing existed 20,000 years ago. Nothing existed 20,000 years ago. So please remember that. Okay. So world biomes, let us get started. Forest, grassland, desert, tundra, aquatic, we had covered this, right? So always remember the entire earth can be basically classified into this मोटा मोटा. अब कोई बोलेगा टैगा कहाँ पे आएगा, कोई बोलेगा चाइना टाइप क्लाइमेट कहाँ आएगा, कोई बोलेगा मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट कहाँ आएगा. So we will discuss all that. Okay, I know, don't think I don't know.
But yeah, if you want to divide the earth, we can divide it into five parts. Okay, it will cover 95% of the earth. Is it absolutely clear? So 95% of the earth can be classified as a forest, as a grassland, as a desert, as a tundra, or as an aquatic biome. समझ में आ गया सर? उसके लिए मत रहो कि 1% ये एक्सेप्शन है, ये वो है, वो लाना है. Entire earth majorly can be divided into either a forest or a grassland or a desert or a tundra or aquatic. Okay, is it absolutely clear? तो ये पांच तो आप रट लेना अच्छे से. अगर कोई भी पर्सनैलिटी टेस्ट में बोले कि अर्थ के कोई मेजर बायोजोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बताओ, सो आई होप यू विल बी एबल टू टेल नाउ, राइट? सो एक बेसिक क्लासिफिकेशन आपको पता चल गई. अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू अ फॉरेस्ट. Let's say tropical rainforest around equator is huge, right? 0 to 10 degree north, 0 to 10 degree south. There are other forests also in taiga, etc. There are other forests in the temperate region, tropical region. Grasslands, so obviously they are huge, right? I told you they are granaries of the world, especially the temperate grasslands of US, etc. See, water is usually not considered in biome, but some authors do consider it. So, but for our studies, because Earth is 70 to 71% water, so if I don't include this, then it will be not good, right? It will not cover 95% of the earth. But water biomes नहीं पढ़ने होते आपको. Okay, सी बायोम का मतलब होता है बायोलॉजिकल होम. सबसे पहले तो ये रट लेना आप, ठीक है? इट इज अ बायोलॉजिकल होम. ये कोई अलग से वर्ड नहीं है. इट इज नथिंग. जैसे आपको मैंने कई बार बताया ना, जैसे इंसोलेशन होता है. इंसोलेशन का कुछ मतलब नहीं होता. इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, ठीक है? सिमिलरली बायोम होता है बायोलॉजिकल होम. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ऑइकॉस का मतलब होता है हाउस, लोगोस का मतलब होता है स्टडीज, राइट? सो बेसिकली दीज थिंग्स विल हेल्प यू. सो बायोम इज नथिंग बट बायोलॉजिकल होम. So it has a lot of communities with minimum common characteristic. This definition separates it from ecosystem. Is it absolutely clear? And it also focuses on climate and soil. Ecosystem में नहीं फर्क पड़ता कि you have to have lots of communities. Okay, even if one or two community, three community, four community is fine. There is one drop of water. It has one amoeba. It has one, let's say, zooplankton. It has one phytoplankton. It has some minerals. That is also an ecosystem, right? But that cannot be an ecosystem. Okay, समझ में आ रहा है point? That cannot be a biome, sorry. So it can never be a biome. It can only be an ecosystem. So ये तो आप अच्छे से पढ़ लेना. Biome is generally named on the basis of its dominant vegetation. ठीक है? So that is what is meant by biome. ये सबसे important point होता है biome का. Biome is not dependent on animals. Biome is dependent on plants. Biome is not dependent on water. Biome is dependent on land. तीन चीजें याद हो गई. बायोम में कम्युनिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. बायोम में एनवायरमेंटल कंडीशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इकोसिस्टम डज नॉट इन्वॉल्व ऑल दैट. ओके, you have to have some minimum common characteristics. Ecosystem is not your biological home. Okay, ecosystem is just a system which has some bare minimum things. Biome is always defined by the land. Why? Because vegetation usually happens on the land, right? Plant vegetation is not very well defined. It has like phytoplanktons and other seaweeds, but majorly vegetation as we speak, it is primarily determined on the land, right? So dominant vegetation and land is biome. So अगर बहुत ही simple भाषा में आपको समझाऊं, so dominant vegetation and land is basically biome. ठीक है सर? Okay. So biomes or bioclimatic zones are divisions by which the natural world can be organized. So organisms which live in each of them possess common constellation of adaptations to them. Okay. So which live in each of them, they have some adaptations to them. Very, very important. So for example, desert biome. So all of them will try to save water, whether it is cactus, whether it is scorpion, whether it is snake, whether it is camel, whether it is rat. Everyone will try to save water, right? Everyone will try to run away from the hot environment in the day. They'll try to do some adaptation. कोई जमीन के नीचे घुस जाएगा, कोई सो जाएगा. So basically there will be a lot of adaptations at that time, right? So all the elements of a biome exist in some meaningful relationship with each other. This is also very, very important. Okay, this is very, very important that you can't have a random biome. समझ रहे हो? All of them are correlated to each other. Cactus is correlated to scorpion, is correlated to the soil, it's correlated to the climate. Everything is correlated. They exist and they interact with each other. It is not, nothing is random.
Okay, so common elements are climate, habitat, animal, plant adaptation, biodiversity, human activity, etc. Now what are the factors which affect biomes? So day and night hours are there, which is responsible for duration of photosynthesis. Is it absolutely clear? So this is a very, very important point. This is the most important point because temperature is determined by this, right? If you have lot of like direct sunlight, lot of day hours, so temperature is usually higher. Usually is the right word. It is not always. This is also very, very important. Ultimately, this mean temperature and precipitation is what determines the biome. Is it absolutely clear? Ultimately, when all said and done, this mean temperature and mean precipitation is the only thing that determines a biome. I have told you thousands of times, right? Ultimately, it will boil down to temperature and precipitation. Okay? So, yeah, so what is UPSC? UPSC is nothing but pressure and time, isn't it? UPSC is nothing but pressure and time. If you keep on putting pressure on yourself and studies for a long period of time, then you will crack UPSC exam. There is nothing else. If you lose the intensity, if you lose out the pressure, if you don't perform to your ability, बस दैट इज ऑल. यूपीएससी मीन्स इफ यू कैन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर दैट मैटर, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, आप पूरी हाई प्रेशर पूरा मतलब जान लगा रहे हो उसमें, एंड इफ यू डू इट फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, you will crack any competitive exam, anything in life, right? So UPSC can also be told as like pressure and time, right? Or you can say effort and time or performance and time. Similarly, biome is 90% defined by what is the temperature and what is the precipitation. ठीक है? कभी भूलोगे तो नहीं लाइफ में, अगर कोई भी पूछे सर बायोम कैसे डिफाइन होता है, हाउ इज बायोम डिटरमाइंड, yes it is determined based on land, yes it is determined based on dominant vegetation, but what determines dominant vegetation? Yes it is determined by climate, yes it is determined by soil, yes it is determined by water availability, yes it is determined by other factors like latitude and altitude and everything, but ultimately क्या है वो चीज, अल्टीमेट क्या है? लैटिट्यूड अगर ऊपर होगा या एल्टीट्यूड ऊपर होगा तो टेम्परेचर कम होगा ना. अल्टीमेटली अल्टीमेट चीज क्या है? अल्टीमेट चीज क्या है कि भाई ये दो चीजें दे दोगे तो कोई भी बायोम बन जाएगा. इट इज ऑलवेज मीन टेम्परेचर एंड मीन प्रेसिपिटेशन. समझ लो, नहीं फर्क पड़ता कौन से लैटिट्यूड पे हो, कौन से एल्टीट्यूड पे हो, क्या सॉइल है, कौन सा डोमिनेंट वेजिटेशन है. मेन इट इज द कोर. ओके, लाइक व्हाई आर वी अलाइव अल्टीमेटली? Why? What is the ultimate reason why are we alive? Because our brain is functioning, right? If your brain is dead, then you are dead, right? You're not alive because your kidney is functioning, you're not alive because your liver is functioning, you're not alive because your heart is functioning, because all of that can be replaced easily, right? Ultimately, to the core of the core, your as long as your brain is alive and healthy, we will make something out of it, right? Why do you die? Is it because your heart gets short? No. When your heart gets short, your brain loses the blood supply, that is why you die. When your liver gets short, your liver ammonia will increase, then will kill your brain and you will die. When your kidneys get shut down, again the toxic material will increase, it will kill your brain and you will die. Do you understand? Ultimately, whichever organ you hit, you always kill the brain. Similarly, biomes are always determined by ultimately when everything is said and done, it is always the temperature and precipitation. Sir, I hope you will remember. देन ऑब्वियसली 50,000 और चीजें होती है, विंड स्पीड, डायरेक्शन, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, सॉइल टाइप, स्लोप, ड्रेनेज, अदर प्लांट, अदर एनिमल स्पीसीज एक्सेट्रा. ये सब होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. बट अगर प्राइमरीली कोई पूछे आपसे, कोई पर्सनालिटी टेस्ट में पूछ ही ले, मान लो कोई ज्योग्राफी का दिग्गज, भाई क्या है बायोम, अल्टीमेटली अगर आपको दो चीजें करनी हो तो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. सी हाई टेम्परेचर हाई प्रेसिपिटेशन मीन्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट? इजंट इट? High temperature, low precipitation means hot desert. Very low temperature, very low precipitation means cold desert. Medium temperature, medium precipitation means tropical deciduous type of forest. समझ रहे हो? So basically अगर टेम्परेचर अगर आपका समर्स में बारिश हो रही है तो मॉनसून टाइप क्लाइमेट हो जाता है, विंटर्स में बारिश हो रही है तो मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट हो जाता है. समझ रहे हो? अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली बस ये बारिश कब हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है. So basically there are a lot of such things, but I hope you remember it's basically temperature and precipitation. ठीक है?
So we have already covered there are 5 major biomes in the world: forest, grassland, desert, tundra, aquatic. Like, okay, these are the 5 things which cover the earth. अगर कोई एलियन आएगा ऊपर से, एलियन आएगा तो उसको ये 5 चीजें दिखाई देंगी ऊपर से, समझ रहे हो? उसको बहुत सारा पानी दिखाई देगा, राइट? और बाकी उसको बहुत सारे फॉरेस्ट दिखाई देंगे, बहुत सारे उसको ग्रासलैंड्स दिखाई देंगे, बहुत सारे डेजर्ट दिखाई देंगे, और बहुत ज्यादा उसको टंडरा दिखाई देगा। आपने कभी नासा की कोई भी फोटो देखी होगी ऊपर से, तो यही तो 5 चीजें दिखती हैं। दिमाग लगाओ, और बिल्डिंग थोड़ी दिखती है आपके घर की। अर्थ इज बेसिकली दीज 5 थिंग्स, राइट? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टंड्रा, एक्वेटिक। कितना कॉमन सेंस है, राइट? अर्थ को अगर 5 कलर में आपको डालना हो तो 5 कलर में पूरी अर्थ पेंट हो सकती है, नहीं हो सकती? सिर्फ अगर मैं आपको 5 कलर दे दूं, आपको एक व्हाइट दे दिया टंड्रा के लिए, एक ब्लू दे दिया एक्वेटिक के लिए, एक मान लो येलो दे दिया डेजर्ट के लिए, एक मान लो आपको लाइट ग्रीन दे दिया ग्रासलैंड के लिए, डार्क ग्रीन दे दिया फॉरेस्ट के लिए, यू विल बी एबल टू कवर 95% ऑफ द अर्थ, इजंट इट? बट ऐसे कोई पढ़ाता नहीं है, कंफ्यूजन ज्यादा होती है। अल्टीमेटली अर्थ इज नथिंग बट दिस, जो मैंने आपको अभी बताया, यही अर्थ है। बाकी सब टाइम पास है। दिस इज इट, दिस इज अर्थ, ओके? नाउ फॉरेस्ट, अब देखो फॉरेस्ट ऑब्वियसली बहुत सारा होता है। ऑलवेज रिमेंबर, लैंड एरिया की बात हो रही है सर। जब भी हम बायोम्स की बात करेंगे, हम लैंड एरिया की बात करेंगे, ठीक है? अदरवाइज 70% ऑफ द अर्थ इज ऑलरेडी कवर्ड बाय वाटर, ओके? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? तो 30% ही बचा, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है? सो आप पॉइंट समझ रहे हो? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? Already 71% of the earth is covered by water, so there is no way, right? कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट? तो कोई बचेगा ही नहीं। 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, दिस इज द एग्जैक्ट डेटा, ठीक है? अगर कोई आपसे बोले 70 गलत है तो उसको 71 बोल देना, बट 70 भी चल जाता है, ठीक है? बट दिस इज द एग्जैक्ट प्रिसाइज डेटा, 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, ठीक है? So we always talk about land area. So how can 1/3 of the earth be covered by forest? It's stupid, right? 1/3 तो बचा ही नहीं है, सिर्फ 29 बचा है, isn't it? जब बचा ही 29 है तो 1/3 लैंड तो हो ही नहीं सकता, तो बहुत ही स्टूपिड है। बट ये कई लोग समझ नहीं पाते इस छोटे से कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जो टीचर होता है या तो ज्योग्राफी में अच्छा होता है, एनवायरमेंट में अच्छा होता है, मैथ्स में अच्छा होता है, साइंस में अच्छा होता है, सो एक होलिस्टिक पिक्चर को ड्रॉ नहीं कर पाता आपके सामने। सो बेसिकली अर्थ अगर ऐसी है, ठीक है, तो उसका रफली, रफली बता रहा हूं मैं आपको, रफली ये जो हिस्सा है, ये सारा वाटर है, समझ रहे हो? सो दिस इज रफली अराउंड 71%, राइट? ये 25 हो गया, 25 हो गया, और ये करीब करीब आपका 21 हो गया, राइट? सिर्फ 29% आपका लैंड होता है। अब उस लैंड पे बाकी सब आ जाता है, क्या आता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट और टंड्रा। उस 29 का 1/3 इज forest. That is why India has a target of covering 33% of the country by forest. आप समझ रहे हो? देखो, लिंक हो गई ना चीजें। क्योंकि अर्थ का एवरेज 1/3 होता है, दैट इज वाई इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो टारगेट्स कि 22 से हमारा 33% पे बढ़ जाए। अब मेरे को परेशान मत करना कि सर वो 22.4 है, या सर उस सर्वे के अकॉर्डिंग तो 23 है। 22-33, 22-33, 22-33 याद रख लेना, कोई गलत नहीं करेगा तुम्हारा, ठीक है? 22-33, 22-33, 22-33 याद रख लेना। 2/3 कवर्ड है, और 50% इंक्रीज और करना है, ठीक है? बहुत इजी बता रहा हूँ, बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कोई भी ऐसे आता है एनवायरनमेंट का, ये वॉमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Over 2/3 of the leaf area of land plants, okay, 70% of the carbon present in living things is present in the forest. Can you imagine? 70% of carbon present in living things is present in forest. So it is not at all a good idea to cut down the forest, because it will again lead to increase in carbon. समझ रहे हो? Do not ever cut down the bloody forests. Okay. 70% of carbon in entire living things is present in forest. सारी लिविंग थिंग्स, ब्लू व्हेल, शार्क, सब डाल दो आप एक तरफ, और फॉरेस्ट एक तरफ, ठीक है? सो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ऑब्वियसली, ओके? एक ट्रॉपिकल होते हैं, जो कि 23.5 के बीच में होते हैं, राइट? एक टेम्परेट होते हैं, जो 23 से 66 के बीच में होते हैं, राइट? और एक टैगा होता है, राइट? जो कि टंड्रा और टेम्परेट फॉरेस्ट के बीच में होता है, इजंट इट? तीन ही तरह के तो हो सकते हैं फॉरेस्ट। एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो सकते हैं जो 0 से 23.5 के बीच में होते हैं। एक टेम्परेट हो सकते हैं जो 23 से 66 के बीच में होते हैं।
और एक ट्रॉपिकल टैगा हो सकता है. टैगा फॉरेस्ट इज लाइक इन आइसी कोल्ड कंडीशंस बट नॉट सो कोल्ड दैट इट मेक्स टंड्रा. मैं इतना सिंपल पढ़ाता हूँ तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ पढ़ाया ही नहीं आज. जब तक कोई कंफ्यूज ना करे लोगों को लगता है पढ़ाया ही नहीं अच्छे से, राइट. ये भी एक धारणा बन जाती है, राइट. देखो अभी सब ट्रॉपिकल, सब टेम्परेट, ये सब चलता रहता है, ठीक है. पॉइंट समझ रहे हो. ट्रॉपिक के हल्का सा आगे ले गए, अरे इंडिया तो सब ट्रॉपिकल कंट्री, राजस्थान, एमपी तो सब ट्रॉपिकल स्टेट्स. अरे ये सब सेमी क्लासिफिकेशन से है, समझ रहे हो. क्लासिफिकेशन की बाल की खाल तो कोई भी निकाल सकता है, राइट. सिंप्लीफाई करने में ऐसी तैसी होती है. मैं आपको कंफ्यूज करता रहता हूँ, बैठ के पढ़ाता रहता हूँ. 150 स्कॉलर्स हैं, उन्होंने 15,000 क्लासिफिकेशन दे रखी है, पढ़ते रहते हैं बैठ के, ये करते रहते हैं. सब ट्रॉपिकल, सब टेम्परेट, ये और वो और. ठीक है यार, जो स्कॉलर अब जिंदगी भर ये कर रहा है. ऐसे आपको पता ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं. आपको तो ए बी और ओ पता होगा जो लैंड स्टीनर के है. उसके अलावा 50,000 और ब्लड ग्रुप होते हैं. इतने सारे क्लासिफिकेशन हैं, बट नहीं पढ़ना होता वो सब कुछ. पॉइंट समझ रहे हो. सो डोंट थिंक टू मच अबाउट दीज थिंग्स, थोड़ा रिलैक्स करो और आगे बढ़ो. Tropical forests are found 23.5 degree north and south of the equator. Obviously, right? It is a very hot and moist biome. These are not tropical rainforest. Is it absolutely clear? Tropical rainforest is a subtype of tropical forest which is found between 0 to 10 degree north and 0 to 10 degree south. ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ के बीच में आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एक सब टाइप मिलता है जिसको हम ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट भी बोल देते हैं, या ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोल देते हैं, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोल देते हैं. ठीक है. कुछ लोग उसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, वो गलत स्टेटमेंट है. डोंट यूज दैट स्टेटमेंट, ठीक है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विल बी फाउंड इन इक्वेटोरियल कंट्रीज, राइट. ऑब्वियसली इंडिया में आता है, इंडिया में सब आता है, किसने बोला नहीं आता. अंडमान एंड निकोबार में क्यों नहीं आएगा, वेस्टर्न घाट्स में क्यों नहीं आएगा, राइट. ऑब्वियसली क्यों नहीं आएगा, व्हाई नॉट. यस इट इज देयर. नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार एंड योर वेस्टर्न घाट्स, इट हैज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बट नॉट सो मच. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट. अगर एक लाइन में इंडिया के फॉरेस्ट को डिफाइन करना है, सिर्फ एक वर्ड में, एक वर्ड अगर कोई बोले, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट. ओके. Yeah, India is a semi-arid subtropical country. Okay, because majority of our peninsula and majority of our north, central, and southern India is semi-arid in nature. Okay. Obviously, there are coast also. I know, I am well aware of it. India is a very diverse country, so calling it a deciduous forest is a stupid thing. But no, no, no. उससे नहीं फर्क पड़ता. Again, this is general rule, right? I just told you it is a general rule, right? Because I told you temperature and precipitation is high. So places like Mawsynron, Cherrapunji, Northeast India receives one of the highest rainfall in the entire world. And because it also receives good amount of temperature, so obviously tropical rainforest will appear, right. This is a generic rule. हो सकता है इसके बीच में आपको कई बार डेजर्ट भी मिल जाए, ठीक है. एक जेनेरिक रूल है सर, इसके ऊपर बाल की खाल मत निकालो. मैं फिर से बार बार यही बोलता हूँ, एवरीथिंग अर्थ में ऐसा थोड़ी कोई पेंट कर रखा है 0 से 10 डिग्री के बीच में कि यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनेंगे, फिर 10 से 23 के बीच में अदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ऐसे पेंट नहीं होता ना, मतलब. ओके. इफ यू गो टू माउंट किलिमंजारो, उसके फुट पे तो बिल्कुल गर्मी होती है, ऊपर जाते हो तो बिल्कुल ऐसे बीच आइस हो जाती है. तो वो तो डिपेंड करता है ना, मतलब तो क्या फैक्टर कौन कौन से डाल दिए. वी आर जस्ट कवरिंग लाइक 90% ऑफ द यूज केसेस, ठीक है. आई नो ऑल द एक्सेप्शंस. आई डोंट वांट टू डील विद इट, सो दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन वी मूव ऑन टू एक्सेप्शन. टीचर क्या करते हैं, एक्सेप्शन पहले घुसा देते हैं, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट कभी क्लियर होते नहीं है लाइफ में, और फिर लोग परेशान रहते हैं. डोंट डू दैट, डोंट बी दैट पर्सन, ठीक है. पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ये सब चलता रहेगा. डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स. क्लाइमेट आई टोल्ड यू राइट, 200 से 250. आई टोल्ड यू 200 से 250. सो वो विल नॉट, नॉर्थ ईस्ट नॉट फॉल इन दिस कैटेगरी. मैं बोल रहा हूँ दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल वहां पे होती है, ऑब्वियसली इट विल कम इन दैट, राइट.
because it has received such a high rainfall and temperature is in this range, it will definitely lead to formation of tropical rainforest. Okay. नहीं नहीं भाई, मेरे को इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े हैं एमबीबीएस में, ऑनर्स और याद भी रखना पड़ता है। तो क्या होता है, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से पढ़ाई करता हूँ कि क्योंकि स्कॉलर्स जो होते हैं वो कॉन्वोल्यूट हो जाते हैं, उनका काम आपको सिखाना नहीं होता है, ठीक है? सो उनका काम आपको सिखाना नहीं होता है, ठीक है? वो अपनी रिसर्च करते हैं, वो अपनी बुक लिखते हैं, ठीक है? मेरा काम आपको सिखाना है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ देम? लेट्स से इफ आई एम क्यूरिंग एड्स, इफ आई एम क्यूरिंग पोलियो, जैसे साक और सौबिन ने पोलियो की वैक्सीन डिस्कवर करी, वो आपको थोड़ी बताएँगे पोलियो क्या होता है? उनको क्या फ़र्क पड़ता है आपको पता है कि नहीं पता? उनकी लाइफ़ का एम है पोलियो की वैक्सीन बनानी है, भाड़ में जाए कम्युनिकेशंस, राइट? मेरी लाइफ़ का एम है थोड़ी है मेरे को एड्स क्योर करना है, कैंसर क्योर करना है, अभी तो नहीं है। बट मान लो वो होता तो फिर मैं रिसर्च कर रहा होता, चिल मार रहा होता, मतलब इन द सेंस कि कम्युनिकेशंस होता था, बट अभी मेरा एम है कि आपको समझ में आना चाहिए। So temperature is 20-25 degrees Celsius. It is 200 centimeters. Okay. There is very little variation throughout the year. Is it absolutely clear? So if they ask you like 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वेरिएशन नहीं होता सर, आप इमेजिन कर सकते हो? 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा you will not find variation in the coldest of the month and the hottest of the month. Can you imagine? There is no diurnal variation. There is no annual variation. There is no monthly variation. There is no weekly variation. There is no day and night variation. There is no variation. दिन में 25 होता है, रात को 20 हो जाता है। गर्मियों में 25 होता है, सर्दियों में 20 हो जाता है। बस इतना ही फ़र्क पड़ता है। दैट्स इट। कोई रहा होगा ना? इफ यू हैव लिव्ड लेट्स से इन त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम इज़ अ वेरी इक्वेटोरियल सिटी, राइट? सो कोई रहा होगा तो दे विल बी एबल टू टेल यू दैट कि देयर इज़ नो कांसेप्ट ऑफ कि आज बहुत ज़्यादा ठंड दिल्ली की तरह नहीं होगा कि ठंड आ रही है, फिर गर्मी आ रही है, फिर बरसात हो रही है। डू यू अंडरस्टैंड? There is no clear-cut division of weathers in an equatorial city. There is no concept of season. There is no season. There is only one season. That's it. Okay. But because we are covering complete tropical, now Bangalore may again like there are some other factors why Bangalore is like that. Okay. But don't consider exception for this. Please understand we are talking about Earth here, not talking about Bangalore. Bangalore is not even 0.00001% of Earth. Okay. We're talking about Earth here. We're talking about 90-95% of the things. So because we're talking about complete tropics, there is one rainy and one dry season. But in purely equatorial, purest of the pure equatorial cities and countries, there is no concept of weather. Okay? The tropical forest contains the greatest biodiversity in the world, and the hot and humid conditions make this biome a very perfect environment for plants, animals, bacteria, microbes, everything is there. ठीक है? तो ये मान लो कि आप पूरे के पूरे अंटार्कटिका में जितनी स्पीसीज नहीं होती होंगी, उतनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के 1 किलोमीटर स्क्वायर के पैच में मिल जाएंगे आपको। आप समझ रहे हो? पूरे अंटार्कटिका में जितनी स्पीसीज नहीं होती, ध्यान से सुनना, वो 1 किलोमीटर स्क्वायर के पैच में आपको मिल जाएंगी एक अच्छे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। All the insects of the world, all the plants of the world, all the animals of the world, everything is found in tropical forest. समझ रहे हो? So it contains the greatest biodiversity in the world. Hot and humid conditions make this biome a perfect environment also for bacteria and other microbes. So microorganisms they remain active throughout the year, quickly decompose matter on the forest floor. Okay, समझ रहे हो? आपकी डेड बॉडी एक दिन में गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और वही अंटार्कटिका में आप मरोगे और अगर आइस ने कवर कर लिया तो 40,000 साल बाद भी आपका फॉसिल मिल जाएगा। मिलते हैं ना? वूली मैमथ के फॉसिल मिल जाते हैं, सेबर टूथ टाइगर के मिल जाते हैं। बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कुछ नहीं मिलने वाला, आपका कोई फॉसिल नहीं बचने वाला वहां पे, ठीक है? मतलब उड़ा देंगे बैक्टीरिया आपको, ठीक है? सो ऑलवेज रिमेंबर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी एक्टिव एंड व्हाट डज एनी रिएक्शन इन केमिस्ट्री नीड्स इन माइक्रो इन लाइफ? Very good temperature and precipitation, right? Microbes are most active when there is good temperature and good precipitation. Entire life is very active when there is good temperature and good precipitation. Life को दो ही चीजें चाहिए, temperature and precipitation, ठीक है? Plants grow so fast that they rapidly consume the nutrients from the decomposed leaf litters. So please remember that soil is very, very bad. Is it absolutely clear? Soil is not at all nutritious. Desert soil is much more nutritious than
a tropical rainforest, but that is a मतलब people don't know about it. People think that desert soil is बंजर, tropical rainforest soil is great. So but ये गलत है, समझ रहे हो ना point? So please remember this. So most of the nutrients are contained in the trees, other plants rather than in the soil, and most nutrients that are absorbed into the soil are leached out by abundant rainfall. जो थोड़ा बहुत बच भी जाता है वो इतनी रेनफॉल होती है, बताया तो सही यार। सॉइल न्यूट्रिशियस होनी चाहिए ना, उसमें एनपीके होना चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट होना चाहिए, उसमें और ज्यादा मिनरल्स होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए ना सॉइल में। बट वो सॉइल में एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट और इट इज गोज डाउन इन द वाटर। यू अंडरस्टैंड? There is such a high rainfall every day. Literally every day it rains in a tropical rainforest. That entire minerals and other abundant organic matter it goes down, or the trees are growing so fast that जो डेड बॉडीज से जो निकलता है मिनरल्स वो सीधा का सीधा पेड़ में चला जाता है, समझ रहे हो? So soil is contrary to popular belief is acidic, very thin. It is not at all nutritious. It's quite infertile. Okay, but because of high temperature and precipitation, it is a tropical rainforest. इस बात से ये प्रूव हो गया कि सॉइल भले ही उतनी अच्छी नहीं है, बट जब टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन बायोलॉजी को मिल गया तो मतलब मचा दिया बायोलॉजी ने, राइट? Life thrives. For example, desert has good temperature. Yes. If you put some water in desert, it will become a tropical rainforest. Okay. And you can experiment it whenever you want. You put lot of water in desert, it will become a tropical rainforest. Okay. Artificial से इंदिरा गांधी कैनाल जाता है कुछ एरियाज से, so they are as good as a tropical rainforest. Okay. Those areas. बल्कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि वहां पे मलेरिया फैल गया। Malaria is a typical tropical disease, by the way. Okay, मतलब, can you imagine this? A desert having a malaria problem. So that's what I'm trying to say. Ultimately, it boils down to temperature and precipitation. समझ रहे हो ना? Every biome I have studied so many books by so many authors. Ultimately, जो अच्छे authors होते हैं वो यही लिखते हैं कि ultimately it boils down to temperature and precipitation. Am I saying there are no other factors? I'm not saying that. I'm saying wind speed, direction, duration, frequency, soil type, slope, drainage, other plant, animal species, everything matters. Okay. Ultimately, mean temperature and mean precipitation is what it matters. Okay. So don't misquote me. So obviously it has like 7 to 8 layers होती हैं इसकी, हर्ब्स, shrubs, creepers और ये सब होते हैं। बट मोटा मोटा अगर आपको बताना हो तो एक 10 मीटर तक होती है, लोअर लेयर होती है, एक सेकंड लेयर होती है 10 to 20 मीटर हाई, palm trees, epiphytes, parasitic plants, एंड कैनोपी और अपर लेयर 20 to 50 मीटर हाई, हार्डवुड ट्रीज होते हैं जैसे बोनी, mahogany, rosewood, ebony, शिंकोना एक्सेट्रा। So tropical forest have a high diversity of flora. There can be 100 different tree species in 1 square kilometer. समझ रहे हो? बताया था ना मैंने आपको, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पूरे अंटार्कटिका में जितनी स्पीसीज मिलेंगी आपको उतना शायद इसके 1 किलोमीटर स्क्वायर के पैच में मिल जाएंगी। इट्स नॉट अ लाइट स्टेटमेंट टू मेक। सो no, not like entire Badmer, entire Jaisalmer, but those areas which are very adjoining to that. So multi-layered layering of the forest allows nil or negligible penetration of sunlight. Again, like it cannot happen in the entire district, right? See, you guys have to understand nuance. Okay, so ये काफी ज्यादा मिसिंग है हमारी इंडियन सोसाइटी में, ठीक है? So subtle nuance ये बहुत important है, ठीक है? So plants like orchids, bromeliads, vines, ferns, mosses, palms, they are present in the tropical forests. So adaptation of flora, so competition for sunlight makes the trees grow tall, ठीक है? And trees attain a height of 25 to 35 meters. They have buttressed trunks, shallow roots. ठीक है? What's nuance? अच्छा क्वेश्चन है। हमारी सोसाइटी में कॉन्सेप्ट ही मिसिंग है। मतलब ऐसे बोलते हैं, मतलब यूएस सोसाइटी में जब रेसिज्म होता था कि ऐसा ऐसा बोलते हैं ना इंडिया में कि ये पढ़ने लिखने में अच्छा है तो ये डॉक्टर बन जाएगा। यू अंडरस्टैंड? So that is a very generic statement. In USA 200 years ago, people used to say blacks are useless, right?
Blacks are slaves, so let them be slaves. They are not making sweeping statement. Okay, let us say if someone eats non-veg in India, he will not be a good Indian, right? If someone drinks alcohol in India, he's not a good citizen. So these kind of statements, okay, sweeping statement, not like with subtle nuance. Winston Churchill, who was Prime Minister of Britain, used to drink every day. So it doesn't mean that he's a bad Prime Minister, right? A point समझ रहे हो मेरा? So if let's say someone wear jeans in Indian politics, then he will not be a good leader, right? Jeans पहन ली तो अच्छा leader नहीं होगा. So that is the nuance is missing there. So that's why they have to wear a costume, right? They have to wear a pajama, they have to wear a kurta and like Nehru jacket uske upar se. So everyone wears a costume in politics. Why? Because they know that Indian society does not have nuance, right? So I hope you understood what I'm trying to say now. So nuance and subtlety is very important. मतलब एक स्वीपिंग स्टेटमेंट की है, एक रिलीजन ऐसा है, दूसरा रिलीजन ऐसा है, तीसरा रिलीजन ऐसा है, और उस रिलीजन में कितने करोड़ों लोग होते हैं, राइट? इंडिया में हर रिलीजन में देयर आर करोड़ ऑफ पीपल. So how can you make such a generalized statement? Anyway, so but nuance is quite missing. So please try to understand nuance. It will help you a lot in your life. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. So they are mostly evergreen with large dark green leaves. Creepers like lianas grow around trees. Waxy leaves drip tips to avoid gathering water on leaves. Waxy leaves also allow water to reach the roots on the forest floor. Leaf stems are also flexible to allow leaves to move with the sun to maximize photosynthesis. समझ गए? So competition for sunlight makes the trees grow tall. Trees attain a height of 25 to 35 meters. They have buttressed trunk, shallow roots. They are mostly evergreen with large dark green leaves. Creepers like lianas grow around trees. Waxy leaves drip tips to avoid gathering of water. Right? ये सब पढ़ा होगा आपने. Waxy leaves allows water to reach the roots. Leaf stems are also very flexible so that they can move to maximize the sun. Fauna की बात करते हैं. देखो, फ्लोरा का मतलब होता है फूल, ठीक है? फ्लोरा मतलब फ्लावर. Fauna का मतलब होता है जानवर. So they also have a great biodiversity, isn't it? So a lot of small animals are found, right? Monkey, birds, bats, snakes, rodent, frog, lizards, बहुत सारे मिलते हैं. We'll discuss everything. They are impenetrable. They have very high vegetation growth. So most of the insects, birds, and animals use the tall trees and understory for shelter, hiding places for their predators, a source of food, etc. All right. So they do not come down to the ground. And the productivity of the tropical rainforest biome is the highest of all biome types of the world. Okay? So they have one of the highest productivity of the world. Okay. Now there are a lot of other classifications, so don't worry about it. So based on the amount of rainfall received, it can be a moist tropical forest or it can be a dry tropical forest. ठीक है? Moist भी तीन तरह के होते हैं. सो जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. समझ रहे हो? सिर्फ वन टाइप ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. देर आर अदर टाइप्स ऑल्सो, लाइक ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, dry tropical forest. Like this is also there, right? I told you this example. Do you remember? ईस्ट कोस्ट पे मिलते हैं इंडिया के. वी आर डिस्कस्ड ईस्ट कोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं इनको कई लोग. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलते हैं आपको, राइट? So we had discussed this. Okay. So please remember that. So जो पूरा का पूरा मेजर पुराना आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल रीजन था, वो आंध्र प्रदेश में चला गया होगा. ओके, डू रिमेम्बर? यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस. तेलंगाना इज द मेनलैंड रीजन एंड जो कोस्टल रीजन है वो सारा का सारा आंध्र प्रदेश मॉडर्न डे में चला गया, राइट? अगर आपने कभी मैप देखा हो तो जैसे एल शेप बनता है. आंध्र प्रदेश मॉडर्न डे मैप इज लाइक एन थोड़ा सा ऐसा होता है, मतलब मोटा मोटा, राइट? This is the map of Andhra Pradesh, right? If you have actually seen. So this is the entire coastline. So यहाँ पे आपको along with Tamil Nadu etc. you will find this. So tropical dry evergreen forest, tropical dry deciduous forest etc. Now temperate forest is characterized by deciduous trees. Okay, India is a land of deciduous trees, right? आपने देखा होगा हमारे पेड़ ऐसे ही होते हैं, गर्मियों में बढ़िया लहलहाते होते हैं और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं वो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, राइट? सो देखो, मैं ये बोलूँ कि कई लोग बोलते हैं सर हिस्ट्री कैसे याद करें इतनी सारी है, तो मैं बोला यूपीएससी में, यूपीएससी को थोड़ी फर्क पड़ता है आप याद करो ना करो, राइट?
यूपीएससी ultimately needs 700 candidates. So, okay. No, no, it's not vice versa, Nidhi. So just before winter, uh, like June, July, August, September में you will find lush growth, and then you will find like India में ऐसा कोई clear नहीं होता. US has clear cut four weathers, okay? Because India is not a temperate country, right? I hope you know that India is not a temperate country. We are not at all a temperate country. We are a tropical and a subtropical country. US will have exactly four weather. जो बोलते हैं ना फोर सीजन्स, होटल की भी चेन है, हर जगह फोर सीजन चलता रहता है. तो एक होता है समर, फिर ऑटम, ठीक है, फिर होता है विंटर, स्प्रिंग. ये चार सीजन वहां पे फिक्स्ड है. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? सो ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस. सो बिल्कुल क्लियर होता है. स्प्रिंग आती है, जिसको हम बसंत भी बोलते हैं. फिर आती है समर, फिर आती है फॉल बोलते हैं वहां पे, जिसको बोलते हैं ऑटम, और फिर आती है ठंडी. ठीक है, समझ गए ना? स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर. समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग. इंडिया में नहीं होता है ऐसा. वी आर नॉट अ टेम्परेट कंट्री. यू विल नॉट फाइंड क्लियर कट फोर वेदर्स इन इंडिया. ऑल राइट. बट यस, in a like city like Delhi, you can appreciate these four weathers, isn't it? You can find a clear cut summer, you can find a clear cut winter for sure. थोड़ा मोड़ा स्प्रिंग भी मिल जाएगा आपको फरवरी मार्च में, थोड़ा बहुत ऑटम भी मिल जाएगा, बट यू विल नॉट फाइंड क्लियर कट वेदर्स. टेम्परेट कंट्री लाइक यूएस विल हैव एग्जैक्ट क्लियर कट डिमार्केशन. ये चार सीजन आपको दिखेंगे, क्लियरली दिखाई देंगे आपको. So these forests are also called as broadleaf forest because the trees have very wide flat leaves, and they are located in temperate region between 23.5 degree and 66, right? So between Arctic poles and the tropics and the areas, right? So Arctic circle और tropical circle के बीच में होते हैं. Can you see North America? So typical example of this temperate is North America. So temperate grasslands will also be found in North America. So काफी सारी जो temperate related चीजें होंगी North America में होंगी. So East Asia, Central, Western Europe, Denmark, Southern Sweden, Southern Norway, etc. So temperate forests have a moderate climate. They are distinguished by a growing season of 140 to 200 days. Now temperature can range very wildly, right? जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, आप यहाँ जाओगे तो सर्दियों में जो टेम्परेचर है -15, -20, -25 ऐसे टच कर जाता है. मेन सिटी की बात कर रहा हूँ मैं. सो रेनफॉल इज लेस. दैट इज वाई दे आर नॉट, they have to shed their leaves, right? And yeah, plants and animals diversity is found more on the forest floor here because sunlight is able to penetrate. Now because there is such a huge decaying matter and the plant growth is not that fast, so it will have a fertile soil, isn't it? So forest floor has a lot of decayed leaves, twigs, moss, animal waste. It is called as litter. Okay, so please remember this. So this is like extremely important. So temperate forests are characterized by 3 to 4 tree species per square kilometer. आपने देखा था वहां पे हमने पढ़ा था 100+ स्पीसीज. यहाँ पे 3-4 बची हैं. अंटार्कटिका में जाओगे तो ये भी गायब हो जाएगा. So trees have broad leaves which are shed annually. Important are like oak, birch, beech, aspen, elm, maple. And these tall trees basically they form the forest canopy. You'll find like earthworms, bacteria, fungus, insects, etc. So all these things are there. So many species time their growth and flowering to the short period just before the canopy opens, and that is why it is called as spring. बोलते हैं ना वसंत कि सब they spring to life, right? So they are called as spring ephemerals. Don't be a spring ephemeral, ठीक है? जब कुएं में पानी आता है तो बहुत सारे मेंढक आ जाते हैं. आपने कभी देखा हो तो इंडिया में बारिश होती है तो बहुत सारे मेंढक आ जाते हैं. तो डोंट बी दैट यूपीएससी एस्पिरेंट की यूपीएससी का सीजन आते ही राजेंद्र नगर में भर जाते हैं लोग. बट जैसे ही बारिश जाती है वो फ्रॉग्स भी गायब हो जाते हैं, राइट? 2-3 महीने के बाद वो सारे के सारे मेंढक गायब हो जाते हैं. सो ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट आर लाइक दोस फ्रॉग्स इन द रेनी सीजन. दे विल कम, दे विल मेक लाउड नॉइसेस, दे विल क्रॉक अराउंड. बट अ सीरियस एस्पिरेंट लाइक मी, वी विल जस्ट प्रिपेयर ऑन द साइड. समझ रहे हो? इट डजंट मैटर टू अस कि बारिश हो रही है कि ऑटम है कि विंड है. वी शुड बी लाइक कैक्टस एंड कॉकरोचेस, राइट? इट डजंट मैटर, कहीं उगा दो, कहीं फर्क नहीं पड़ता, राइट? कैक्टस एंड कॉकरोच. एंटार्क्टिका में भी अगर कॉकरोच होगा तो सरवाइव कर जाएगा, ठीक है?
So leaves of short plants have adaptations to cope with low light levels, and gradient of soil moisture, soil depth, elevation aspect will control the distribution of trees, etc. ना fauna में आएंगे आपके hawks etc. बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से, कोई जल्दी नहीं है. सब डिवीजन होती है, जैसे इसमें टेम्परेट फॉरेस्ट में ड्राई कॉनिफर होता है, मॉइस्ट कॉनिफर होता है, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आते हैं इसमें, राइट. फिर टेम्परेट कॉनिफरस, टेम्परेट ब्रॉड लीव्ड रेन फॉरेस्ट. ओके, विल कवर दिस. Now taiga is a Russian word for forest. Okay, so I hope you can differentiate between tundra and taiga. Okay, समझ रहे हो. टैगा का मतलब ही फॉरेस्ट होता है. टैगा इज अ रशियन वर्ड फॉर फॉरेस्ट. तो इससे चार पांच चीजें क्लियर हो जाती है, राइट. रशिया में होगा तो ठंडा होगा, रशिया में टैगा होगा. तो अगर वो पूछे टैगा कहाँ पे देता तो बोल ही सकते हो रशिया में, क्योंकि रशियन वर्ड है टैगा, राइट. इसमें फॉरेस्ट है, ये भी क्लियर हो जाता है, राइट. रशिया नॉर्थ में है तो इनको ज्यादातर टाइम में नॉर्थ में ही मिलेंगे, राइट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बोरियल फॉरेस्ट. समझ रहे हो. एक वर्ड से आप पूरी कहानी लिख सकते हो. इफ यू नो टैगा इज अ रशियन वर्ड, रशिया इज अ नॉर्दर्न कंट्री, रशिया इज अ वेरी कोल्ड कंट्री. So basically, and it is means is forest. So it's a forest. It's in Russia. It's in north. It's in boreal forest. It's a snow forest because Russia is the biggest country in the world, right? Russia occupies huge area of Earth's land. So obviously, this will become one of the largest terrestrial biome in the world, right? समझ रहे हो. मतलब आपने देखा हमने क्या किया अभी. हमने सिर्फ ये पहली लाइन इसलिए लिखवाई थी मैंने, सो कि वो एक बार में आपको सब हो जाए. जैसे रशिया, मतलब इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इंडिया का जैसे एरिया होता है ना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. आपने सुना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है इंडिया का एरिया. रशिया का है 17, 17. सो इमेजिन, मतलब 5 इंडिया लिविंग टुगेदर एरिया वाइज. ओके, सो इट कवर्स, मतलब 1/8 ऑफ अर्थ इनहेबिटेड लैंड एरिया. 1/8. ओके, so it's not a joke. All right, 1/8 of inhabited land area. 1/8, 12.5% land area अर्थ का जो inhabited है. So that is covered by this. Anyway, so चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं. So it is also called as boreal forest, snow forest. It is the largest, okay, terrestrial biome in the world apart from the oceans. It occupies 17% of Earth's land surface area. नहीं, फ्रांस में आप कंफ्यूज कर रहे हो. फ्रांस में जो मेन लैंड फ्रांस की बात नहीं हो रही, फिर उसमें आप ओवरसीज टेरिटरी ले आते हो. आप समझ रहे हो. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू थिंग्स. सो फ्रांस वैसे तो छोटू सा है, बट ओवरसीज टेरिटरी बहुत सारी है. So 17% of Earth's land surface area, 29% of the world's forest area. So they are in a circumpolar belt of the northern hemisphere. Please remember this, largest terrestrial biome in the world apart from the oceans. ठीक है. Ocean तो obviously 71% है. Now taiga always merges into the tundra. So they occur between 50 to 60 degree northern latitude. Is it absolutely clear? अरे पोल के चारों तरफ चक्कर काटता है ना. ये अगर अर्थ होगी तो पूरा ऐसे चक्कर काटेगा ना उसके चारों तरफ ऐसे, सरकमपोलर, तो उसको बोलते हैं. नाउ सीजन्स आर वेरी शॉर्ट वार्म समर्स एंड वेरी लॉन्ग कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स, इजंट इट. सो जो समर्स होंगी वो शॉर्ट होंगी, मॉइस्ट होंगी, मॉडरेटली वार्म होंगी, और winters will be brutal, winters will be quite cold. So yeah, that is there. So length of the growing season in boreal forest is 130 days. So please remember this. In North America, taiga occupies much of Canada and Alaska, as well as part of the extreme northern continental US. In Europe, it covers most of Sweden, Finland, Norway, Scottish Highlands, lowland, coastal areas of Iceland. And in Asia, it extends to Russia, northern Kazakhstan, northern Mongolia, northern Japan, on Hokkaido. Okay. So these are some of the important things. All right. So now coldness is the dominant climatic factor in taiga. Sun is never directly overhead. Okay. Is it absolutely clear? Possible ही नहीं है ना. सिर्फ ट्रॉपिक्स में ही तो जाता है. पॉसिबल ही नहीं है. 23.5 डिग्री के बियॉन्ड सर कैन नेवर बी डायरेक्टली ओवरहेड, राइट. पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है. इट डज नॉट मेक सेंस. मतलब फिजिक्स आपकी फेल हो जाएगी उसके बाद.
सो सोलर एनर्जी इज वेरी लेस इंटेंस, राइट? अगर दिखता भी है सूरज तो ठंडा लगता है, राइट? आप राजस्थान में सूरज को देखोगे तो आंखें दर्द करने लग जाएंगी, बट यहाँ पे आप जाके देखोगे तो कोई लोड नहीं होगा, राइट? ठंडा ठंडा कूल कूल सूरज लगता है वहाँ पे। So it is spread out over a huge area of our surface than in the equatorial region. So long winter nights are there. Okay, there is very less cloud, so it goes escape in the outer atmosphere also. Now snow cover will reflect much of the in solar. आपको मैंने बताया था 90% of the incoming solar radiation will be directly reflected by the fresh white snow. Highest albedo value is of fresh white snow. Highest albedo values of fresh white snow, obviously naturally occurring. Obviously I'm talking about naturally occurring. अब आपने कोई आर्टिफिशियल सब्सटेंस बना दिया, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो वहां पे मेरा सर दर्द मत करना। अर्थ वुड बी सिग्निफिकेंटली कोल्डर विदाउट द टैगा, as the albedo of taiga is less compared to a smooth snow covered energy reflecting surface, right? आप पॉइंट समझ रहे हो? So please remember this. Okay, अगर टैगा हटा दिया जाएगा और वहां पे सिर्फ बर्फ होता तो अर्थ की बैंड बच जाती है। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? अगर आप टैगा का फॉरेस्ट कवर हटा दोगे वहां पे और वहां पे गलती से स्नो आ गई तो, या फिर, तो मतलब आप यू कांट इवन इमेजिन क्या होगा। बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट बायोम ऑफ द वर्ल्ड, सो यू कैन इमेजिन अर्थ विल बी वेरी सिग्निफिकेंटली कोल्डर इफ यू रिमूव टैगा फॉरेस्ट। ठीक है, तब समझ में आ रहा है पॉइंट? So, movement, position, strength of these storms control much of the weather in the northern hemisphere. So, there is a lot of Siberian cold air which meets with like steep, strong winds. Okay. So, please remember this. We'll cover this later on also. Extended period of clear, dry weather is caused by very high polar highs का नाम सुना है आपने? Precipitation is in the form of snow, usually पानी में नहीं आता. Taiga soil is quite young, it is poor in nutrients, it lacks the deep, organically enriched profile. Severe cold hinders the development of soil. Soil is mainly acidic because of chiluviation. Okay, so please remember that. Okay, chiluviation. So that is a keyword. So podzol are same soil, least acidic soil. Podzol is FAO classification, Spodozol is USDA classification. कई लोग इसमें जिंदगी भर अपने बाल नोचते रहते हैं कि पॉडजोल क्या होता है और स्पोडोजोल क्या होता है। ये सेम चीज है, ठीक है? कई लोग परेशान होते रहते हैं, जिंदगी भर चीखते रहते हैं कि ये नहीं समझ में आया, हमें वो नहीं समझ में आया। जैसे क्या होता है इंडिया में, आपकी जो बुखार कम करने वाली दवाई है उसको बोलते हैं पैरासीटामोल, ठीक है? बट सेम ड्रग को यूएसए में बोलते हैं एसिटामिनोफिन। ठीक है, समझ गए? सो वहाँ पे उनको बोलते हैं एसिटामिनोफिन। सो बेसिकली वो सेम ही चीज़ है। सो ऐसा नहीं है कि एसिटामिनोफिन अलग है और पैरासीटामोल अलग है, बट लोग अपने बाल नोचते रहते हैं, डॉक्टर से पूछते रहते हैं, सर ये, ठीक है? सो पॉडजोल इज एफएओ क्लासिफिकेशन, स्पोडोजोल इज यूएसडीए क्लासिफिकेशन। ओके, soils are very highly leached spotozol, and since soil is acidic because of the falling pine needles, forest floor has only lichens and some mosses growing on it. Okay, so it has only lichens, some basic mosses etc growing on it. So please remember this fact. All right, sir. Productivity community of a boreal forest are obviously lower, right? कहाँ से प्रोडक्टिविटी आएगी? ना पानी है, ना टेम्परेचर है, बेसिक लाइकन्स मॉसेस होते हैं। बट मोस्ट प्लांट्स आर एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट। ओके, बस वो पड़े रहते हैं वहाँ पे, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ द टैगा विंटर, राइट? वहाँ पे आपको उनको कंबल थोड़ी उड़ाओगे, प्लांट बेटा ठंड लग रही है वो कंबल ओढ़ लो। वहाँ पे तो उनको नेचुरली सर्वाइव करना है ना, मतलब वहाँ पे आपको हीटर थोड़ी लगाओगे। सो दैट इज व्हाई यू विल नॉट फाइंड मच स्पीसीज, विल फाइंड लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट लाइक पाइन, व्हाइट स्प्रूस, हेमलॉक। और जो जानवर वहाँ पे सर्वाइव करते हैं डोमेस्टिक है, आप एक डॉग को छोड़ के आ जाओ वहाँ पे, 4 दिन बाद नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हो? वहाँ पे आपको हार्डी बनना पड़ता है, ठीक है? तो अभी तक आप सब लोग जब भी अपने घर में रहते हो तो वी आर लाइक पालतू कुत्ता, समझ रहे हो? वी आर लाइक डोमेस्टिक डॉग्स। थोड़ी गर्मी लगी तो मम्मी ने एसी चला दिया, थोड़ी ठंड लगी तो पापा ने कंबल उड़ा दी, अगर पैसे नहीं है तो भैया ने दे दिए, राइट? पालतू कुत्ते की तरह हो, बिल्कुल डजंट मैटर, डोमेस्टिकेटेड डॉग की तरह हो। और जो असली है, मतलब जो टैगा में जो वुल्फ लड़ रहा होगा अपने खाने के लिए, इमेजिन करो, राइट? चिथड़े उड़ा देगा उस डॉग के, राइट? डू यू अंडरस्टैंड?
हार्डी, बिल्कुल जो मतलब पैदा होते ही जिसको बुखार हो गया होगा, एंड हाफ ऑफ हिज ब्रदर्स डाइड, राइट, और वो अकेला सरवाइव किया होगा जैसे तैसे कुछ करके. इमेजिन दैट काइंड ऑफ एन अपब्रिंगिंग, राइट. अगर आपको इस पे एक मूवी भी है, मतलब इफ यू वांट टू सी, अल्फा करके एक मूवी है, यू कैन सी लाइक हाउ हार्ड द लाइफ वाज 20,000 years ago. इट्स अ गुड मूवी. 20,000 years ago, इट्स ऑन Amazon प्राइम. 20,000 साल पुरानी स्टोरी है. यू विल इमेजिन कि आपकी लाइफ तो मतलब लड्डू है, लड्डू. ठीक है, लड्डू है, मतलब एब्सोल्यूट लड्डू खाते हो आप रोज. ठीक है. सो just study very hard and like make sure that you crack this exam. Okay. So mosses and lichens thrive on the damp ground on the sides of the tree trunks, and southern regions of taiga have trees like oak, maple, elm. Okay. So शैलो रूट्स टू टेक, मतलब ऐसे एक बार में मत देखना बैठ के, पता चला 2 घंटे बर्बाद कर दिए. ऐसे देख लेना, आधे घंटे देख लिया खाता खाते टाइम, फिर डिनर के टाइम आधे घंटे देख लिया, फिर वॉशरूम में आधे घंटे देख लिया, फिर सोते टाइम आधे घंटे देख लिया. समझ रहे हो? तो उसके ब्रेक भी मिल जाएगा. ठीक है. The shallow roots to take advantage of the thin soils, seasonal alteration of biochemistry, and narrow conical shape of northern conifers. ठीक है. So needle shape होती है obviously ताकि water loss भी minimize हो जाए. ठीक है. We will cover this. Anyway, then you have grasslands. So they are of two types. One is called as the temperate grasslands and one is called as the tropical grassland. ठीक है sir. Don't get ever confused. One is called as the temperate grasslands. One is called as the tropical grasslands. So they are characterized as lands dominated by grasses. So there are of two main divisions of grasslands, tropical and temperate. So tropical grasslands are also called as savanna. Temperate grasslands are also there. So tropical grasslands are called as savanna. ठीक है. ये सवानो नहीं है, ये सवाना है. ठीक है. कई लोग इसको सवानो बोलते हैं. इट्स नॉट 9:15. ओके, इट्स सवाना. ओके. So savanna is a mixed woodland grassland ecosystem. So they are tropical grasslands. Is it absolutely clear? Because they are present near to the equator. ठीक है. They cover 20% of the Earth's land area, but not as a continuous belt. On the other hand, tundra and taiga are circumpolar. They will find they are continuous belt. Obviously, पानी बीच में आ जाएगा तो अलग बात है, but they are otherwise continuous, right? Primarily, African savanna are the best. Okay, जो सफारी होती है वो यही होती है. साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं. सो अफ्रीकन सवाना विल बी फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका सराउंडिंग सुदान. साउथ अमेरिकन सवानास विल बी लाइक सिराडो, कैंपोस लानोस सुना होगा ना. कैंपोस इज इन ब्राजील, लानोस इज इन कोलंबिया, वेनेजुएला. तो दीज आर लाइक ट्रॉपिकल सवाना या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ऑस्ट्रेलियन सवाना विल आल्सो बी फाउंड साउथवर्ड्स टू नॉर्दर्न मानसून लाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इंडिया में भी सवाना होता है, लाइक कर्नाटका तेलंगाना रीजन में. ठीक है. So yeah, so I'll see you and we will discuss this. So बाकी बाद में पढ़ते हैं अपन अच्छे से. So thank you and have an awesome day and take care. So थोड़ा बहुत बचा है, इसको पढ़ लेना आप अच्छे से. So the entire PDF is uploaded and we'll cover this. Okay. Hey guys, what's up? How are you doing? So I hope everyone is doing absolutely fine. So today we're again going to continue our environment and ecology course. And so did you get your message on time? So I had scheduled this class in the night because I could not take it yesterday. So I hope you got the message on time and everything is fine. So yeah, let us get started with our sessions. Okay. So we have covered a lot of these files and yeah. So I'll just give like 1 minute for everyone to settle down so that we can also proceed. Can everyone hear me? Is everyone absolutely fine? So my head, everything is fine. So yeah, let us get started. And so we had covered biomes in India, right? So that one topic we had covered, right? Biomes in India yesterday. Last time I was telling you about forest and everything, etc. So वो सब हम पढ़ चुके थे अच्छे से, isn't it? So that we had covered in detail. Okay. So